Fibers form the skeletal system of the plant. Without it, no plant will stand upright. Similarly, fibers form a basic support system for our digestion, which is needed by every human body on the earth. With this, Om, and I welcome you all in this video, which is based on the importance of dietary fibers and the physiological effects of dietary fibers in our human body. So let's start the video with the latest research which suggests that there is artificial depletion of dietary fibers in our daily life due to use of polished rice and cereals actually we are using, which is creating a major lifestyle problems in our life such as colon cancer, diabetes and different type of diseases. So let's start with the basics. What is actually a dietary fibers? It is a non-starch polysaccharide physiologically important component of a diet. It is a plant-based component which generally passes through a digestive system without breakdown and resisting digestive enzymes. Now let us talk about the components of dietary fibers. The components are cellulose, hemicellulose, pectin, lignin and gums. Now let us discuss the role of these components. The first one is cellulose, which acts as a stool softener. The second one is hemicellulose, which actually helps in weight reduction. The third one is pectin, which reduces the bad cholesterol in the body. The third one is gums, which actually controls the diabetes. Other one is lignin, which actually prevent the gallstone in the body. These are the components and we have discussed the role of these components. Now let us divide the dietary fibers in their two categories, which is actually a soluble fibers and non-soluble fibers. Soluble fibers, as the name depicts, they are soluble in water. For example, we consume the beet, root and the carrots, which are actually soluble fibers. Pectin gums comes in the category of soluble fibers. The next category is the insoluble fibers, which comes with the category of cellulose, hemicellulose, which actually does not dissolve in the body but act as a bulk forming. For example, we consume the leafy vegetable, which is the best insoluble fibers for our body. Now, let us discuss about the physiological effects of digestive fibers in the body. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को हम समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि डाइटरी फाइबर्स का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में. द फर्स्ट वन इज इनसॉल्युबल फाइबर्स, जो हमारे एक्ट करता है बल्क फॉर्मिंग में. एंड द सेकंड वन इज सॉल्युबल फाइबर्स, जो कि हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स को इमल्सिफाई करता है. इसके बाद एक टाइप की गैस रिलीज करता है, स्टूल सॉफ्टनर की तरह एक्ट करता है. डाइटरी फाइबर्स फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है. ये हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को भी इंप्रूव करता है. एंड डेली लाइफ की अगर बात करें तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक्चुअली हमारे डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज की बात करें तो फीसेस प्रोड्यूस द कार्सिनोजन एजेंट्स. अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है और फीसेस एक्चुअली बल्क में स्टोर हो रही है पेशेंट में, तो ये जनरली एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है कोलोन कैंसर का. डाइटरी फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइन में इस टाइप के बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करता है जो रिक्वायर करते हैं हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, विच प्रिवेंट द कार्सिनोजन चेंजेस इन आवर सेल. इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि इसकी क्या डेली रिक्वायरमेंट है. इट इज रिकमेंडेड दैट 25 to 30 ग्राम पर डे इज सफिशिएंट फॉर अ कॉमन ह्यूमन बॉडी. इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर. होल व्हीट एंड सीरियल्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर डाइट. ग्रेन्स और व्हीट्स एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं, उनके कवरिंग्स में सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल राइस ब्रांड, तो जनरली इसके कवरिंग होती है राइस की, इसमें सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. लास्ट में वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा. डाइटरी फाइबर्स इज नॉट अबाउट डाइजेशन, इट्स अ फीडिंग ऑफ बेनिफिशियल ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन आवर गट. विद दिस, थैंक यू एंड जय हिंद.